Today we are going to start with complete new chapter, Journey to the End of the Earth. This chapter had been omitted for the past 2 or 3 years. You might think कि ये मैम जो है हमारे जले पर नमक क्यों छिड़क रही हैं? If it was omitted, why she is telling it to us? The reason is, when we are starting with a chapter, you should also know कि what kind of questions, when this was included, used to come, or if it is a new concept, what are the kinds of questions we can come to, because you may not find questions for the past 2 or 3 years from any sample paper. हाँ, उससे पहले it was there for 2 years, बीच में it was omitted, but long back it was there. 2005-06 से लेकर तो था. This chapter is about the ecological balance, global warming. It is about how the humans are actually responsible for depleting this nature. हमने इसके साथ में एक पोएम पढ़ी थी, कीपिंग क्वाइट, जिसका आपका टेस्ट भी हुआ. And in keeping quiet, what we had done is that humans unintentionally, बिना मतलब maybe they don't want to spoil the nature, but unintentionally humans are responsible for raging war against the environment. Whether it is the nuclear gas, whether it is the human disasters, human-induced disasters, whether it is cutting of the trees. तो ये जो chapter है, The Journey to the End of the Earth, it is about the author, जिसने इसे लिखा है. Her name is Tishani Doshi. Tishani Doshi. She is a very versatile poetess, journalist, and a dancer. She has written many books, many fictions, and she has traveled to the exciting world of Antarctica. और ये जो हमारा जो ये वाला चैप्टर है, this chapter is dealing with how they had gone to Antarctica, what is stored there. अब अंटार्कटिका हमारे लिए क्या है? On the map it is the lowest. अगर हम मैप को वर्ल्ड मैप देखते हैं तो it is the extreme end. What we know about Antarctica is a place where you have ice. But Antarctica is also the storehouse of the carbon prints. In जो वर्ल्ड इवॉल्व हुआ, जब वर्ल्ड आपका शुरू हुआ, उसके जो कार्बन प्रिंट्स हैं, दे आर ट्रैप डाउन द आइस. वहां जो आइस है उनके नीचे वो कार्बन प्रिंट्स हैं. Some of the countries like France, Germany, they are having their science base over there. मतलब वो अपना scientific base जो है वो उन लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है. They study, and it is actually a place which is untouched by humans. You can find the enchanting igloos and more or less the penguins. ऐसा नहीं कि वहाँ humans बिल्कुल नहीं है, वहाँ पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, but at the same time humans have now started traveling over there. There is a very famous voyage. एक मतलब कि जो यूरोप है, and this is truth, यूरोप है, वहाँ पर मतलब कि they conduct a tour. इसमें वर्ल्ड के स्कूल्स में से बच्चों को लिया जाता है
and they traveled to Antarctica to study about the evolution of Earth. So this particular program is quite successful. जो ये वाला जो मैं प्रोग्राम आपको बता रही हूँ, that is Students on Ice program, and this was started by a Canadian, Geoff Green, जो कि बच्चों को लेकर जाते हैं, and there they try to understand when उनके सामने ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, उनके सामने आइसबर्ग्स आपके कोलैप्स होते हैं, they are able to see the extent of global warming on the earth, and this also gives us a message. ये भी मैसेज देता है कि अगर हम लोग अपने अर्थ को ध्यान नहीं करेंगे, then the end of this earth is very imminent, and it is going to be there. We cannot stop it. She also tells about how the smallest organism on this earth, the microorganism on this earth, is important for the macroorganism. उसने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लिया है कि वहाँ पर you find the algae which are very important for the growth of the trees, and she has given a cycle कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आज खत्म कर देते हैं तो then very soon the macro organisms would also collapse. So it is the humans who have to understand that how we are actually contributing to the depletion of this earth. As I said, this chapter is about a program, Students on Ice. The students are taking to Antarctica. Now why Antarctica? A question आता कि भाई क्यों Antarctica? अमेरिका क्यों नहीं? America is already developed, and Antarctica has a simple ecosystem. It doesn't have the biodiversity. It has got the flora and fauna, but it doesn't have the biodiversity. And here you can see the consequences of the changes. They had started their journey on a vessel, यानी कि ship, जिसका नाम है academic Cholesky. Academic मतलब related to study. And this had a group of students from all over the world. She commenced her journey from Chennai, that is पहले मद्रास था तो मद्रास लिखा हुआ आपकी उसमें. She commenced her journey from Chennai, and then when you are crossing from one country to another country, you are also crossing the time zone. Like अगर आप इंडिया में हो and you are traveling to Europe, तो जो आपका टाइम जोन है वो भी होता है. दैट इज वाई हम से कहते हैं अभी अगर इंडिया में सुबह है तो अमेरिका में रात होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टाइम जोन. सो शी हैड टू क्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स. शी हैड टू क्रॉस डिफरेंट वाटर बॉडीज, क्योंकि इंडियन ओशन है आपका, पैसिफिक है, तो शी हैड टू क्रॉस 3 oceans also, and ultimately they had reached over Antarctica. It was around 100 hours journey. You can आप अंदाजा लगा सकते हो 100 hours. 100 hours journey. They reached over that place, and it was for her. It was an exotic moment because when she boarded down, जब वो अपने शिप से नीचे उतरे तो चारों तरफ there was sheath of ice, and
ऊपर चलकर जब वो जा रहे थे तो द आइस वॉज नॉट वॉट वी सी नियर आवर प्लेसेस, इट वॉज अ प्रिस्टीन क्लीन आइस, एकदम ट्रांसपेरेंट। और आइस के नीचे जो आपके एल्गीज है, आइस के नीचे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे कुड सी दैट सील, फिश, वो सब उनको दिखाई दे रहा था। She says that this part जो अंटार्कटिका है, it was the part of Gondwana lands, but there you don't find the advertisements, there you don't find the trees, there you don't find the human population. Now here you can see the trapping of carbon, which was billions of years ago. साइंटिस्ट कैसे पढ़ते हैं किसी भी एवोल्यूशन को? दे स्टडी द ट्रैप ऑफ कार्बन। कार्बन की जो ट्रैपिंग होती है, दे स्टडी इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इवन फॉर स्प्रेडिंग दी व्हाट वी कॉल एज ग्लोबल वार्मिंग। आपका जो है ट्रैपिंग की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है कि कितना हम लोग जो है कार्बन को एमिट कर रहे हैं। There she had studied about the carbon, there they were staying for around 2 weeks अंटार्कटिका में। और वो कहती है अर्थ का जो 90% आइस है, अर्थ का जो ओवरऑल 90% जो आइस है, इट इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। There you can see the huge icebergs, the blue whales, and वहां पर क्या है, you have the 24 hour summer light होता है, क्योंकि 6 महीने वहां पे you have the summer and 24 hour, sorry 6 months you have the winter. You can see there is no noise. हमने कीपिंग क्वाइट में पढ़ा था, इट वुड बी एन एक्सोटिक एंड स्ट्रेंज साइलेंस। दे कुड फील दैट स्ट्रेंज साइलेंस ओवर देयर। अगर उनको वहां पर आवाज आती थी तो वो थी वहां के आइसबर्ग के टूटने की, द ब्रेकिंग ऑफ द आइस, द आइसबर्ग्स। What she says is later on that humans have been on this earth for around 12,000 years. जबकि हमारा जो अर्थ है, it had formed billions of years ago. और हम लोगों को इस धरती पर आए हुए सिर्फ 12,000 साल हुए हैं, but within short span of 12,000 years of human evolution, the earth's face has completely changed. The mother nature has been exploited. The humans are battling with each other for the resources, and that is where the climatic change, the global warming, the epidemics, everything is passing on. According to the narrator, बहुत important question है आपके बोर्ड का, that the present and the future lies hidden in Antarctica. क्योंकि if we look into the Earth's carbon, वहां से हमें पता लगता है how much year old the Earth was. And when we are studying about the microorganisms, we can debate what will be the future. उसमें एक word आता है, एक sentence आता है, in fact, little changes in the environment can bring big repercussion. Little changes in the environment can have big repercussions. मतलब छोटे छोटे जो changes हैं, अगर हम लोग उस पर ध्यान दें तो दैट कैन रिजल्ट इन अ लार्जर वे। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे कहने से क्या होता है,
अगर मैंने कूड़ा डाल दिया तो क्या हो गया? क्या मेरे एक के कहने से कूड़ा खत्म हो गया? मैंने अगर आज पटाखे चला दिए तो हो गया? पूरी दुनिया जला रही है तो क्या कुछ नहीं हुआ? दिस ईयर आई वॉज लिटरली, मतलब कि व्हेन आई सॉ द पीपल वर cracking the bursting the crackers like they had become mad, I really felt bad. And it is not like कि I am blaming someone else. Even in my own house, मेरी सिस्टर का जो बेटा था, मतलब उसकी जो उनके घर वाले खुद लेकर आए थे. On one hand, we see people battling for death in asthma. On the other hand, we don't care. हम कहते हैं हमारे एक से हो गया. But yes, बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है ना, वैसे even the single step taken by the humans will be adding. इसका उसने एक एग्जाम्पल दिया कि वहां पर इन अंटार्कटिका you will find out the micro phytoplankton. Very 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 important question of your books. मतलब जब ये आया तब ये आया था. जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंड इट इज अ नरिशमेंट फॉर द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स इन दैट रीजन. अब होगा क्या? अगर हमने ओजोन लेयर को डिप्लीट किया तो द एंटायर वहां पर जो साइकिल है दैट वुड बी मूव्ड एंड दैट वुड indirectly affect the marine life. So she says that around 66.55 degrees south of equator, she says it was really a breathtaking experience when she could see the crab-eater seal sitting in the periphery. She was overwhelmed. She was having many questions, but she did not have the answer. The only thing what she understood through this journey was that the future generation, the next generation जिनको लेकर जाते हैं, they should take the responsibilities to take this earth towards the future safely. They started the journey in a Russian vehicle and they went through different areas and they could understand how the biodiversity has been hampered. So in another word, why as a class 12 student, this chapter is there in you all are. One is it is a literature portion. It is a self experience. जैसे हमारा deep water था, it was an experience of the narrator Douglas. Similarly, this is also the experience of the narrator, that is Tushani Doshi. On the other hand, it is also about the past, present and future of humans. Past क्योंकि आपके कार्बन वहां पर ट्रैप्ड है. Present, you can see the melting glaciers and you can see its repercussions in the future. So at one place you are able to visualize everything. So that's the chapter Journey to the End of the Earth. I'm taking the chapter right now with NCERT.
If you want to know more about the planet's past, present, and future, the Antarctica is the place to go on to Bon Voyage. Bon Voyage जो है, it's a French term. It's used for a journey by water. Early this year, and the writer is Tushani Doshi. You have to keep everything in your mind. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, academic Sholasky. ये आपके पेपर में, it can be an MCQ question as well as when you are asked to narrate about the first experience. Heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.9 degree north of equator in Madras. Madras is the earlier name for Chennai, and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many as ecospheres. By the time, because if you look into the world map, इंडिया से अंटार्कटिका जाने के लिए इंडियन ओशन से क्रॉस करते हुए आपको नीचे जाना है, एंड इंडियन ओशन जो वाला जो एरिया है, दैट सेड टू बी वन ऑफ द रफेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड. By the time I actually set foot on Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, aeroplane, ship. यहाँ से आपका जो है towards your plane, एयरपोर्ट से दूसरी जगह, फिर शिप से जाना. And so my first emotion on facing in Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम वहाँ पर नीला आसमान शायद ही देखते हैं. वो when we were having the pandemic, तो वो पिक्चर्स शेयर होती थी ना कि दिल्ली से हम लोगों को जो है अब श्रीनगर दिखाई देने लग गया है. So that was the time, I think, when we had actually seen the clear sky. And horizon होता है where the earth and the sky appears to meet. हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्षितिज. Followed up with an immediate and profound wonder at its immensity, its isolation, क्योंकि वहां पर एकदम खामोशी, but mainly at how there could have ever been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. ये तो एक हम लोगों के लिए, this is always a mystery which is there in our history, that India was part of Antarctica. और मैं भी सोचती हूँ कि अगर हम वहाँ पैदा हुए होते तो हम लोग कैसे होते. Because India, Antarctica, South Africa, South America, Australia, they all were the part of Gondwana land. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent. Super इसीलिए because it consisted of the present America, South Africa, India, Australia, and Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. Things were quite different then. क्यों? Because humans hadn't arrived on the global scene.
हम इंसान आए ही नहीं थे यहाँ पर तबाही मचाने. And the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived. But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, मतलब dinosaurs गए और उसके बाद हम mammals are the one who are the milk giving bio के बच्चे हो. The landmass was forced to separate into countries. मतलब it was after these events that the land in Gondwana broke out due to the volcanic eruptions in the inside the crust. Ocean tectonic movements में आपके जो है when it was then at that moment this broke down and it went into different continents, different countries. और आज हम जिस वर्ल्ड को जानते हैं उसका तकरीबन मैप. You all have studied the physiographic geography of India. To visit Antarctica now is to be a part of that history. इसका मतलब क्या होता है? This is because ये वो history है, मतलब जब हम अंटार्कटिका जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन, how do geological phenomena help us to know about the history of mankind? जब हम वहां जाते हैं तो हमें ये भी याद आता है कि we are part of this land. If we are from Africa, we are from South America, we are from Australia, we are from India, we were part of this land. To get a grasp where we have come from and where we could possibly be heading. It is to understand the significance of Cordilleran Fold and pre-Cambrian granite shields. आपको वहां पर बड़े बड़े आपको folds and shields आपको दिखाई देते हैं. Granite, ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all this can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northward, jamming against Asia to buckle its crust and form Himalayas. ये वही वाला है जो हमने 9th में पढ़ा था. That Gondwana land का India जो था, this was the actual land जो Gondwana का था. This Deccan Plateau was the actual land. And this was which collided with the Asian continent, जहां पर आपका पहले टेथिस सी रहता था. एंड धीरे 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 ये मिट्टी आपकी सेडिमेंट हुई एंड इट हेल्प्ड इन फॉर्मिंग द हिमालयास. हिमालयास के रिवर्स की वजह से आपका नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ था, ओपनिंग अप द एंड देन साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. अगर आप लेफ्ट में देखते हो तो आपका नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, बीच में आपका, तो ये जो बीच में ड्रेक पैसेज है, to create a cold circumpolar current keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. और Antarctica आपका नीचे. When you go over there, ये जो geographical phenomena है ये आपको बताता है कि आप इस एरिया के you were the part. For a sun worshipping South Indian like myself, she is a South Indian and she started 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory or metabolic but also for the imagination. It's like ये पेपर में आया हुआ, this one, ये वाला जो लाइन है ये आई लाइन में आया था. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers. मतलब it was quite slippery. पिंग पोंग बॉल मतलब जब आप उसके ऊपर चलते तो ऐसे ऐसे से चलता है ना, तो the ice was quite slippery. No trees, billboards, buildings.
You lose all earthly sense of perspective. Earthly sense of perspective मतलब आपको वहां जाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर पार्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि वी आर सो stubborn. We are so habitual of so much of noise. The visual scale ranges from microscopic to the mighty midges, mites to blue whales and icebergs as big as country. You may be even asked to identify the poetic device or what you call as device. का नाम क्या है? Literary device. अरे वहाँ आप छोटे छोटे midges and mites, the small insects, blue whales, icebergs जो कि कंट्री के जितने बड़े हैं. The largest recorded is size of Belgium. सोचो, बेल्जियम हरियाणा से भी बड़ा. Days go on, and in surreal is appearing to be real. 24-hour austral summer light. Austral refers to Australia, means you have there 24 hours summer, 6 months and 6 months. And ubiquitous silence. मतलब ominous, weird, strange, interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheets consecrates the place. अगर आपको वहाँ कुछ शोर सुनाई देगा तो that would be only when the ice melts or the icebergs break. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history. And for humans, the prognosis is not good. Now, what is prognosis? आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, right? So, when you go to the doctor, what happens is the doctor asks you, आपको क्या बीमारी है? तो आप बताते हो मुझे खांसी है, जुकाम है. You tell some of the symptoms. So they are all the prognosis, and that is used for the diagnosis. तो अगर आप वहां पर जाते हो and you find out these symptoms, you will find that for us, for the humans, it is not good. Now, in this passage, she tells कि humans ने कितना deplete कर दिया है. Human civilizations have been around for a paltry मतलब only, small. ये जो मैं साथ साथ में आपको शब्दों के अर्थ बता रही हूं ना, इसका गंतव्य ये है कि आगे CUET में ऐसे सवालों के, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. मतलब अगर हम देखें तो मतलब कि what is the meaning of barely a few seconds? मतलब अगर हम अर्थ के जियोलॉजी को देखते हैं, इवोल्यूशन को देखते हैं, तो we have been on this earth, we मतलब the humans have been on this earth only for 12,000. यानी कि मतलब कि 1 घंटे में 1 सेकंड की कितनी वैल्यू है. सिमिलरली उतना ही टाइम ह्यूमंस को आए हुए, मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. बट इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our village, town, city, mega cities. लेकिन हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि इतने ही टाइम में हमने तबाही मचा दी. रकस मतलब तबाही. हमने नेचर पे अपना पूरा डोमिनेंस रख लिया. हमने शहर बना लिए, हमने गांव बना दिए, हमने मेगा सिटीज बना दिए. The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. अब हम
अपना तो करते हैं हम, दूसरे जो हमारे स्पीशीज हैं उनके साथ भी हम लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज slowly and steadily we are snatching the resources of the flora and the fauna. यानी कि जो बाकी स्पीशीज हैं हम उनका खाना पीना सब उठा रहे हैं. जब हम मिट्टी को उठा लेंगे तो what will happen? मिट्टी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे. The and the unmitigated burning of fossil fuels have created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. Day before yesterday, I had seen one आई वॉज सीइंग वन, बहुत मतलब कि को देखा था मैंने, मतलब दैट डे इट वॉज टू हॉट 29th को. तो देर वॉज एन आर्टिकल इन द न्यूज़ पेपर विच सेड कि उस दिन शायद 42 to 43 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन वी ऑल वर फीलिंग इट इज अराउंड 51 डिग्री. एंड दिस इज वेरी ट्रू. यस, हम लोग बचपन से हैं, एंड नाउ फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स हम लोगों ने कभी पंखे ऐसे नहीं चलाए जैसे अब हम लोगों को बिना पंखों के रहने की आदत नहीं है. सी कंफर्ट एक जगह है, बट ऑन द अदर हैंड गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है. तो व्हाट इज द रीजन? वी आर नॉट गेटिंग द रेन ऑन टाइम, वी आर नॉट गेटिंग द विंटर्स ऑन टाइम. क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट, ये पेपर का क्वेश्चन है. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates in our time. There have been many earth summits, बहुत सारे summits हुए हैं, yet we have not found the solution. Reason is, you are responsible, I am not. The time is when we need to say we are responsible. ठीक है, अब घर के अंदर मान लो, आपके घर के अंदर किसका एग्जाम्पल लूं मैं? कौन सा बच्चा है जो मेरी अच्छा बच्चा? वरुण. चलो, वरुण के घर में पापा से ग्लास गिर गया, ठीक है, ग्लास टूटा, नुकसान हुआ, राइट. नाउ घर के अंदर हम बोल सकते हैं दिस वाज नॉट ब्रोकन बाय मी. लेकिन जब कोई बाहर वाला पूछेगा तो आप ये थोड़े बोलोगे कि यू से हमारे घर में ग्लास टूटा था. यानी कि वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस. सिमिलरली व्हेन समथिंग इज हैपनिंग टू दिस अर्थ, वी नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर. इसका ये मतलब है, Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्योंकि धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है. नेपाल में जब आपका अर्थक्वेक आया था तो साइंटिस्ट ने कहा दैट हिमालय का जो हाइट है दैट इज इंक्रीजिंग. मतलब वो बड़ा नहीं हो रहा आप जैसे. इट इज बिकॉज ऑफ द शीट, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द ओशियंस, इट इज बिकॉज ऑफ द breaking up of the glaciers that is in the Antarctic region. Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the earth? Maybe or may not. Antarctica is a crucial element in this debate. Again important, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population,
therefore remains relatively pristine in this subject, but more importantly, it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon record trapped in its layers of ice. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अंटार्कटिका को ही हम क्यों ले रहे हैं. एक तो वो सबसे नीचे है बेटा, एंड जो वर्ल्ड में 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स है, मतलब इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, बट जो मेजर है देयर फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू अंटार्कटिका. सेकेंडली, इन जो वर्ल्ड का कार्बन है इट इज ट्रैप्ड, तो द साइंटिस्ट ट्राई टू स्टडी देम. If we want to study and examine Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. ये आपके पेपर में आया हुआ है जब ये था. Students on ice, यही प्रोग्राम का नेम है. This is the, और आपके पेपर में जो क्वेश्चन था वो था what is the Students on Ice program about. मतलब ये प्रोग्राम किसके बारे में है, तो आपको बताना है कि दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय अ कैनेडियन प्रोफेसर जॉफ ग्रीन, जिसके अंदर हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं. दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल आर टेकन, व्हाई नॉट सेलिब्रिटीज. सेलिब्रिटीज जाएंगे वहां सेल्फी खींचेंगे, ब्रांड बनाएंगे, पैसा कमाएंगे. आपके पेपर का क्वेश्चन है, मैं नहीं बोल रही हूं. कभी सोचो कि मैम को इतनी, what will celebrities do? Whatever they do for money or they do for name. They don't do anything for actually doing something. इनमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए जिनको इस चीज से फर्क होता है. एंड स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए उनको इन्वॉल्व किया जाए. अभी आएगा पेपर, अभी आएगा. Students on Ice, the program I was working with on the Shokalski aims to exactly do this by taking high school students to the ends of the world. अभी भी चलता ही, अभी last year था, मतलब after the pandemic they had started, and providing them with inspiring educational opportunities which will help them to foster a new understanding and respect for our planet. It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could give back in a limited way. Because they are not bothered about what is happening. They are bothered about their status. With Students on Ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. मतलब उनका मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब आपके जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, they are the right person for taking this decision since you are in the age when you are ready to learn. जब आप बड़े हो जाते हो ना, उसके बाद कहते हो हमने बहुत लर्न कर लिया. दिस इज द टाइम व्हेन यू आर रेडी टू अब्सॉर्ब एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू एक्ट. ये पेपर का क्वेश्चन है कि व्हाई द स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल आर टेकन फॉर दिस एक्सपेडिशन. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not affected by it. It is easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respected latitude and longitude, but when you visibly see glaciers reiterating and ice shelves collapsing, you begin to realize that global warming is very real. अपने घर में काउच में बैठकर आप टीवी में देखते हो, आप बात करते हो
कि भाई ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट व्हेन you actually go there, you understand what is happening. जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ तो that is only a surreal, but when you experience it, you understand actually what is the need of the hour. Antarctica, because of her simple ecosystem, it has been personified as a human, and lack of biodiversity. मतलब you have the ecosystem but you don't have a biodiversity. Humans are not there. As I said, some of the countries like France, Germany, they are having their scientific bases over there, but not. It is a perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. यही मैंने आपको बताया था कि this had come in the paper. कि what does it mean to say? Explain with the example of phytoplankton. Phytoplanktons आपके हैं grasses. The phytoplanktons are the micro grasses in the sea. And they are important for the fish which are there. Southern Ocean food chain. These single-celled plants, grass है, single-celled है, like amoeba, use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important process called photosynthesis. मतलब जो हमारा photosynthesis हम लोग पढ़ते हैं in our class 6, 7, 8, उसमें सबसे smallest जो आपका है that is आपका in the ecosystem, that's आपका phytoplankton. Scientists warn that depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplanktons. अगर phytoplankton नहीं होगा तो क्या होगा? The marine animals, the birds of that region will deplete. यानी कि अगर हम चाहते हैं whale जिंदा रहे तो small fish जिंदा रहे तो phytoplankton, एंड फाइटोप्लैंक्टन जिंदा रहना है तो इकोलॉजी को देखना है, यानी कि आपका पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम. सबसे छोटा एल्गी फिश, फिर देन आपका लार्ज, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल. इन द पैरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर एग्जिस्टेंस. मतलब कि इन दिस एग्जाम्पल, ये जो छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसमें आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड take care of the small things and the big things will fall into place. This question had come for a 10 marks. जब ये 10 marks का आता था उस टाइम में, when this chapter was included. This is because this tells the ecosystem goes from smallest to large. Like अगर हम अपने हिंदी में अगर याद हो आपको, the grass is eaten by cow, cow gives us milk, milk is drunk by humans. So that means if you want कि humans को milk चाहिए तो आपको grass की देखभाल करनी पड़ेगी. और यहाँ वो कहते हैं कि grass में जो phytoplanktons हैं, that the small grass जो वहाँ पर है, उनकी देखभाल करोगे तो आपके जो large animals हैं वो रहेंगे. So that means even the smallest organism on this world has the same importance what a human has. 11th स्टैंडर्ड में हमारा एक चैप्टर था द एलिंग प्लैनेट. मुझे बहुत अच्छा था वो चैप्टर. इन दैट देयर वाज दैट कि वी आर शेयरिंग आवर अर्थ विथ
more than 600 million anonymous microorganisms. कुछ के शायद हमें नाम आते हैं साइंटिफिकली, बट कुछ अभी भी एनोनिमस हैं जिनका हमें नाम नहीं लिखा. दे आर अनकैटेगराइज्ड, दे आर अनकैटलॉग्ड, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा. द सिंपल एग्जाम्पल इज सॉइल में जो अर्थवॉर्म है. हमारे लिए अर्थवॉर्म इज एन इंसेक्ट, और यू कैन से विच, मतलब हम उसको देखकर उसके ऊपर नमक डालते हैं, बट सॉइल में उसका प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी. My Antarctic experience was full of such epiphanies, means the fancy, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees. The Shokalski had managed to wedge मतलब अपने आप को लगाया था. वहां पर कोई पोर्ट तो है नहीं, into a thick white stretch of ice between Peninsula and Tadpole Island. Peninsula is a land surrounded by water on 3 sides, और उसकी वजह से वो लोग आगे जा नहीं पा रहे थे. So the captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank. This is gangplank. And walk on the ocean. यहाँ पर ocean is not water. Here it is ice. अब वो लोग आगे नहीं जा पा रहे थे, तो वहीं पर वो लोग जो है they started walking. So there were 52 kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. चारों तरफ उनको दूर दूर तक सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, और वो था सिर्फ आइस. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. ऊपर आइस की परत, नीचे ओशियन. In the periphery crabbiator seals were stretching. अगर आप नीचे देखोगे तो आपको वहां पर seals sunning themselves on ice floes. थोड़े दूर आप देखोगे तो seal आपके धूप ले रहे थे. Much like the stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of revelation. Everything does indeed connect. मतलब आप उसको महसूस कर सकते हो. 9 time zones from India to 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. Beauty of balance in play on our planet. You may be asked the literary device alliteration. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it? Or would we have gone the way of dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? क्या अंटार्कटिका अभी आइस से भरा है, तो क्या वो भी वैसा होगा जैसे पहले था? हम लोग जिंदा होंगे उसे देखने के लिए? Who is to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. Again, this statement has come in the paper. What does it mean? A lot can happen in a million years. Million years में तो बहुत कुछ हो सकता है, but एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? Much difference. The world divided in one day. If you look into the history of any catastrophe
दैट वॉज वन डे, एक दिन सुनामी आया था और पूरा का पूरा जो मतलब कि द वर्ल्ड में कितने एरियाज थे जहां लाखों लोग चले गए थे। एक दिन भुज में अर्थक्वेक आया था और पूरा का पूरा अर्थ नीचे चला गया था। एक बार कुछ हुआ था एंड एंटायर सिविलाइजेशन हैड वैनिश्ड। दिस मीन्स the smallest, the minutest, and what we say, the tiniest elements have to be taken care. Instead of blaming, we need to take care of this earth. चाहे वो छोटा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और नहीं होगा तो what will happen is over the period, जैसे अंटार्कटिका एक दिन टूट कर अलग हो गया, हो सकता है कि the earth may break into pieces. There might be an oceanic volcano, there can be a tsunami, there can be an earthquake, and of course अगर हम जिंदा हैं तो definitely we can also face the global wrath of global warming, the hole in the ozone layer. So this chapter, journey to the end of the earth, means end of the earth is Antarctica is in the extreme south. That is why it has been called as end of the earth. And this is the author's personal experience on how she had managed to go to Antarctica and how she was mesmerized by the beauty of Antarctica as well as the ice that has been stored there. So this is the chapter, journey to the end of the earth.